Good morning to everyone. This is the sum we will do now in this lecture. You can see in your screen. Following is the balance sheet of Zakul Auto Limited as on 31/3/2017. Balance sheet is given below. Liability asset. In the liability side, you can see 3,009% redeemable preference shares of ₹100 each, ₹80 paid up. So this is not a fully paid preference share, and we have learned, I have told you before, that partly paid preference shares cannot be redeemed. तो अगर हमें ये प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है तो पहले इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा. हम ₹100 का शेयर है तो पूरा 100 पेड अप होना चाहिए, 80 नहीं. सो फर्स्ट वी विल मेक इट फुल्ली पेड अप. 2,40,000, 1,20,000 equity shares of ₹10 each, 12 lakh. Revenue reserve is 1,50,000. Revenue reserves are free reserves. We can use them for the purpose of redemption. 8% debentures, 2 lakh. Current liability, 2,70,000. Fixed asset, in the asset side, we have fixed asset, 12 lakh. Investment at cost, 2,90,000. Bank balance, we have 1,70,000. Other current assets, we have 4 lakh. On the above date, 9% preference shares are redeemable at a premium of 5%. What happened on the above mentioned date, that is 31st March 2017, is the date given above. On that date, the 9% preference shares were redeemable at a premium of 5%. So 5%, एक शेयर ₹100 का है और 5% प्रीमियम दे रहे, तो 100 का 5% is ₹5. The company made a final call of ₹20 per share on these shares. All the shareholders paid the call money. तो पहले हमें ₹20 का जो पेंडिंग अमाउंट है उसका कॉल करना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल pass the entry for due and then we will pass the entry for receiving the money. Company issued 20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share for cash consideration. 20,000 equity shares market में sell किया ₹10 का, and per share ₹2 premium means ₹10 share issued at ₹12 in the market. And the issue was fully subscribed and paid for. Everyone have paid the money for the shares. Part of the investment was sold for ₹1,32,000 at a profit of 10% on cost. तो ये कितना इन्वेस्टमेंट सेल हुआ ये दिया नहीं है. पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2,90,000. उसका पार्ट कुछ तो हिस्सा सेल किया, एंड कितने में सेल किया, 1,32,000, एंड दिस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. तो ये तो हमें सेलिंग प्राइस पता है. अगर कॉस्ट का 10%, तो अगर कॉस्ट 100 है तो ये 110% में सेल हुआ. अगर कॉस्ट 100 है तो ये 110 में सेल हुआ. तो लेट अस फाइंड आउट हाउ मच इज द कॉस्ट. लेट अस फाइंड आउट कि कितने का चीज जो है वो 1,32,000 में सेल हुआ. दैट वी विल मेक अ क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट इट 100%. जिससे कंपेयर किया उसको 100 लेते. तो अगर 100 कॉस्ट है तो 10% प्रॉफिट में सेल किया, मीन्स 110 में सेल किया. अगर 110 इज 1,32,000, then how much is 100? Do a cross multiplication. You will get the answer. The company redeemed the preference share as per the terms. One preference shareholder holding 100 shares was untraceable. तो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया, बट वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर who was holding 100 share was untraceable. Untraceable means we could not pay him the money. हम उसको पे करना चाहते हैं बट हम उनको पे नहीं कर पाए. We could not pay that person because he was untraceable. Maybe he was
his address must have changed. Maybe his address must have changed, or maybe the address is not clear, but he was not traceable. So उसको पे नहीं किया, मतलब बाकी लोगों को पे किया. Hence, payment could not be made to him. You are required to pass the journal entries in the books of Zakal Auto Limited to record the above transactions. To record the above transactions. So let us start the first entry. Call scenarios तो नहीं है, but we have final call to be made. तो what we will call it? We will call it, ये कौन सा कॉल बना रहे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. We can also write preference share. ये किसका है? 9% preference share final call account. Preference share final call account. 9% preference share फाइनल कॉल अकाउंट. जब फाइनल कॉल करेंगे तो कितना? 3000 शेयर्स है, उस पे 20 रुपीज वी विल कॉल डेबिट. 3000 शेयर पे 20 रुपीज, बिकॉज वी नो 3000 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस है, तो 3000 में 80 पे हुआ, 20 स्टिल पेंडिंग. टू व्हाट विल हैपन? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल इंक्रीज ना. जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा कलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल इंक्रीज. सो 3000 into 20 करो. हाउ मच यू विल गेट? 3000 into 20. टेक योर कैलसी. 3000 into 20 करो. हाउ मच यू विल गेट? Are you getting 60,000? This is final call due. अभी तक कलेक्ट नहीं किया. Being final call due. Due on preference shares. It's due. Now we will receive the money. What is told in the question? In the question, all the shareholders paid the call money. 20 rupees was due on preference shares, and number of preference shares are 3000. So 20 rupees due tha. Abhi all the shareholders has paid the money. So what we will get? We will get money. Cash bank account debit. कितना मिलेगा? 60,000. एंड ये जो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट में है, नाउ व्हेन द मनी इज रिसीव्ड, दिस विल कम इन द क्रेडिट. इसको कैंसिल करके बताएंगे पैसा रिसीव हो गया. दैट इज 60,000 बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड. बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट received. This is done. Now what we will do? इसके बाद कॉल सिनेरियोस कुछ नहीं है. Call final call. Our preference shares are now fully paid up. Now we can go ahead with the redemption. But before that, we have sold part of investment for 1,32,000. So ये 1,32,000. इसमें हमने प्रेफरेंस शेयर इसमें हमने रिडेम्पशन के लिए पैसा चाहिए, तो हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया. प्रॉफिट का 10% है. सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस इज 110%. तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट अगर 100 है तो उसमें 10% प्रॉफिट ऐड करके वी हैव सोल्ड. सो हाउ मच विल बी द कॉस्ट? गिव अ क्वेश्चन मार्क. Do the cross multiplication. 100 into 1,32,000 divide by 110. How much you are getting? Are you getting 1,20,000? So we are getting कि हमने 1,20,000 का जो
इन्वेस्टमेंट है वो 1,32,000 में सेल किया 10% प्रॉफिट में. सो 1,20,000 का 10% इज 12,000 मीन्स 1,20,000 प्लस 12,000 हमने 1,32,000 में इन्वेस्टमेंट को सेल किया. When we are selling the investment, what do we get? When we are selling the investment, we get money at for how much we have sold. 1,32,000 we have sold. तो हमारा असेट जो कि डेबिट बैलेंस है सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट को कम होगा तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट. बट वी हैव सोल्ड द कॉस्ट इज 1,20,000. वी हैव सोल्ड फॉर प्रॉफिट. सो प्रॉफिट का क्या करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit is for 12,000. 10% profit of one cost का 10% है profit. So 1,20,000 का 10% 12,000 being investment sold. सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी ठीक है. For the purpose of redemption. So after this, is there any fresh issue? फ्रेश इशू भी है. कैश के लिए हमने मार्केट में इक्विटी शेयर भी सेल किया है. तो इक्विटी शेयर 20,000 है 10 रुपीज का 2 रुपीज के प्रीमियम में सेल किया एंड इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. सो व्हाट वी विल डू when we will sell the equity shares we will get cash. When we will sell the equity share we will get cash. 20,000 equity share सेल किया 12 रुपीज में. हाउ कैन यू से दैट 20,000 इंटू 10 रुपीज इक्विटी शेयर प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम. 20,000 इंटू 12 so we will get 2,40,000. इसमें 2 what we are getting equity share capital account. 2 premium जो दिया है that will come in the securities premium. 20,000 into 2 rupees premium and equity share 20,000 का face value है 10 rupees. So how much we are getting? 2,40,000 being fresh issue of shares, being new shares issued for the purpose of redemption only. This is also done. This is also done. Now ये भी हो गया. नाउ हम लोग ड्यू का एंट्री पास कर सकते हैं. अब हम लोग डायरेक्टली रिडेम्पशन के ऊपर जा सकते हैं. सो वी वांट टू रिडीम 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड एट 5% प्रीमियम ऑफ 5%. प्रीमियम ऑफ 5% पे रिडेम्पशन करने वाले 9% प्रेफरेंस शेयर. सो व्हाट इज द एंट्री नंबर 5? Sorry, not 5%. It is 9% preferential. Premium also we are giving कितना 3,000. One preference share is of 100 rupees. 3,000 में 5% का प्रीमियम
5 rupees we can say, because 100 rupees अगर प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है उसमें 5% प्रीमियम है, तो 100 का 5% is 5 rupees. So this becomes 3 lakhs, and 3,000 into 5 becomes 15,000. 3,000 into 5, ये पूरा पैसा we will give to the preference shareholders. Preference shareholders account, we will have to give them 3,15,000 being amount due on redemption. Now next, CRR क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने 1 lakh, sorry, here 2 lakh has come from equity, so CRR is required. So let us go, let us give it second one, nominal value of preference shares to be redeemed, 3,000 into 100, that is 3 lakhs, less nominal value of fresh issue of new shares, which is 20,000 into 10, that is we are getting 2 lakhs. तो जो बैलेंस रहेगा that will be capital redemption reserve, CRR. So that we are getting 1 lakh. Now sources, we have only revenue. Revenue reserves है हमारे पास, उसमें 1 lakh है क्या? उसमें 1,50,000 है, so we can use 1 lakh. So we'll write here revenue reserve. How much? 1 lakh we will use from 1,50,000. So revenue reserve reserve है, revenue reserve है, liability है, credit balance यूज करेंगे डेबिट हो जाएगा. हमने यूज किया 1 lakh to CRR account. So this will be 1 lakh being CRR created. Now we also have to write off प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी राइट ऑफ करना है, उसके लिए भी हमारे रेवेन्यू रिजर्व में 1,50,000 है, तो वी कैन यूज रिमेनिंग फ्रॉम ईयर ना, 50,000 में 15,000 यूज कर सकते हैं. तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट. That is how much we want, 15,000. 50,000 और बचा था, उसमें से 15,000 ले लिया. Being premium on redemption return off. Now we have to make the payment. Payment करते वक्त if we will see here 100 प्रेफरेंस शेयर को हम नहीं पेमेंट कर पाए, सो अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन निकालते हैं. अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन कितना? टोटल
preference shares is 3000, जिसमें से 100 शेयर्स का हम पेमेंट नहीं कर पाए. सो कितना 2900 शेयर्स वर पेड ₹105 ऑन रिडेम्पशन. 100 रुपीज शेयर का और 5 रुपीज प्रीमियम का. सो देयरफॉर 2900 into 105, how much we are getting, कितना अमाउंट पेड है रिडेम्पशन में. 2900 into 105, we are getting ₹3,04,500. मीन्स अनट्रेसेबल कितना है? हाउ मच इज द अनट्रेसेबल? अनट्रेसेबल अकाउंट कितना है? इट इज 100 shares which one shareholder holding 100 share was not traceable. So उसको 100 into 105, 100 into 105 means ₹10,500 is untraceable. This is shown under other current liabilities in the balance sheet of the company. इसको कहा, ये हमारा क्या है? नोट. दिस इज टू रिमेम्बर दैट अनट्रेसेबल अकाउंट को किधर शो करना है? करंट अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करना है, इन द बैलेंस शीट of the company, balance sheet of the company, in the liability side of the balance sheet of the company. Of the balance sheet of the company. So now when we will make the payment, preference shareholder को पैसा मिलेगा. So we'll write here preference shareholders, credit में था, debit हो गया, and what will go out? Cash bank. How much cash bank will go out? We have to find out here. 3,04,500. 3,04,500 being amount paid on redemption. This is also done. So with this sum is done. ये sum done हो गया, खत्म हो गया. Thank you everyone.